So, beta, we are discussing the chapter life processes. Life processes mein I have discussed what is life and what are the characteristic feature of life and the life processes like that excretion, nutrition, respiration, transportation, control, coordination, growth, movement, reproduction. All these are life processes, and these are all functions that is performed by the living organism to maintain their life. It is called life processes. अब इन लाइफ प्रोसेस को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? दैट इज अ फूड. फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि कुछ भी करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज श्योर. कोई भी वर्क डन अगर हमें करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए. तो यहाँ पे जो लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं, जस्ट टू मेंटेन आवर सेल्फ एज ए लिविंग, so we need energy. That energy we are taking from the food. And उसमें क्या है कि what is the meaning of nutrition? और न्यूट्रिशन वर्ड आया है न्यूट्रिएंट से. What is the meaning of nutrient? A nutrient can be defined as a substance which an organism obtain from its surrounding and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents like tissue or organ. So carbohydrate and fats are nutrient. You can say proteins and minerals are nutrient. So these are the nutrients. Now what is nutrition? Nutrition is a process of intake of nutrients like carbohydrate, fat, protein. Nutrition एक process है nutrient लेने को. तो nutrients are inorganic भी हो सकते हैं और organic substances भी हो सकते हैं which the organism obtain from its their surrounding in order to synthesize their body constituents. जैसे आपने बॉडी के सेल्स बनाने हैं, स्किन बनानी है, तो वो भी बना सकते हैं and use them as a source of energy. You need ATP for doing some work. The process of intake of nutrients and its utilization by the organism in various biological activities is called nutrition. It is called nutrition. So you should know what is the meaning of nutrient and what is the nutrition. न्यूट्रिएंट जो है वो सब्सटेंस है और न्यूट्रिशन जो है जो आप ये न्यूट्रिएंट ले रहे हो, इसके अपटेक के प्रोसेस को हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशन. तो इट इज ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म टू द इनसाइड. इट्स कॉल्ड न्यूट्रिशन. आप जो खाना ब्रेकफास्ट आपने किया, लंच किया, तो दो प्रोसेस है. जो फूड को आप इंटेक कर रहे हो, एनर्जी ले रहे हो, इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड nutrition. Now there are various type of nutrients on the basis of function they perform. मैंने आपको बताया था कुछ एनर्जी फूड्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. अब जैसे आपको देखो कि जिनको कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उनके लिए कि ग्लूकोज की बोतल लेते हैं. ग्लूकोज क्या है? इट इज ए सिंपलेस्ट फूड. इट इज ए सिंपलेस्ट. हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं वो इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती हैं. बाकी जो भी चीजें वो कॉम्प्लेक्स है, लाइक कार्बोहाइड्रेट जो भी आप खा रहे हो, स्टार्च, जो भी चीजें दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. तो फर्स्ट यू हैव टू डाइजेस्ट. लेकिन अगर आप ग्लूकोज लेते हो तो ग्लूकोज क्या होती है? इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल. इट इज द सिंपलेस्ट शुगर दैट इज इन दैट वी कैन एब्जॉर्ब एंड इट इज कॉल्ड सिंपल शुगर. ठीक है. तो ये हमारे क्या है? एनर्जी फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स, क्योंकि जो सेल्स में ज्यादातर जो बनी हुई चीजें हैं, जैसे हमारा घर ईंटों से बना हुआ है, ऐसे ही जो सेल्स है उसमें मेनली प्रोटीन्स आर देयर एंड रेगुलेटिंग फूड्स आर विटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज दे आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द फैक्टर्स और कोफैक्टर्स फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज. दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बट दे आर वेरी एसेंशियल. So what is the following is the energy food? I told you yesterday also. The carbohydrate and fat is a energy food. Okay. Because human food should consist of a variety of nutrients such as carbohydrate, minerals, fat, protein, vitamins, and fiber. However, carbohydrate provides the human body with maximum energy. Carbohydrates are broken down to various forms of glucose, which act as a best source of energy. ठीक है. ग्लूकोज से नीचे हम ब्रेक नहीं करते. ग्लूकोज को हमारी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होता है. जब हम आगे अभी हम डाइजेशन के बारे में बात करेंगे. स्टमक में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद
ब्लड के अंदर आ गया और एब्जॉर्ब के बाद एसिमिलेशन हुआ, मतलब सेल्स, ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, वहां से जो ऑर्गन्स जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे ग्लूकोज को, और फिर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा जिसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि हम उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद ही जो एनर्जी हमें मिलेगी दैट वी विल यूटिलाइज। तो रेस्पिरेशन जो हम कर रहे हैं, दैट ऑक्सीजन वी आर टेकिंग, दैट बेसिकली इज यूज्ड फॉर द यूज्ड इन द लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमारी सेल्स में जाएगा, सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, फॉर दैट वी डोंट नीड ऑक्सीजन। बट जब ग्लूकोज से आगे फर्दर ब्रेकडाउन होके कंपाउंड ऐसे बनेंगे दैट विल एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट विल डिस्कस ड्यूरिंग द डाइजेशन पार्ट। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, there are mainly two types. One is autotrophs and heterotrophs. That is the method of obtaining food by the organism is called mode of nutrition. I told you that one is phototroph, and in autotroph means those who can self, the organism which synthesize organic molecule from inorganic sources. ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लाइक दे आर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम CO2 जस्ट लाइक प्लांट्स। इसमें दो कैटेगरी हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमोटोट्रॉफ्स। फोटो मींस वी आर यूजिंग वर्ड फोटो फॉर सनलाइट। फोटो मेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग एनर्जी derived फ्रॉम द सन, दैट इज सोलर एनर्जी। कीमोटोट्रॉफ्स, दैट कीमोसिंथेसिस makes organic compounds using energy derived from the oxidation of chemicals. ये सनलाइट को डायरेक्ट यूज नहीं करते, इनके सल्फर या कुछ नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका ये ऑक्सीडेशन करके जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से ये फिर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। बट दे आर डिपेंड, दे कैन मेक देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ऑटोट्रॉफ। द सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ मींस they other source feeding, like they cannot make their food. Organisms which obtain organic molecule from other organisms, they are called heterotroph. Hetero means others, or troph means refers to nutrition. So the heterotroph means nutrition obtained from others. In heterotroph nutrition, the organism cannot make or synthesize its own food from the inorganic raw materials like carbon dioxide and water, and uses the food made by the autotroph organism directly or indirectly. ठीक है, so heterotroph nutrition is that mode of nutrition in which the organism cannot make its own food from simple inorganic minerals materials like carbon dioxide and water. So all the animals have a heterotroph mode of nutrition, and most bacteria and fungi also have heterotroph mode of nutrition. बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफ भी होता है, हेटरोट्रॉफ भी होता है, बट बैक्टीरिया मोस्टली कौन से हैं? हेटरोट्रॉफ। फंजाई सारे कौन सी हैं? हेटरोट्रॉफ। एनिमल्स क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स। तो द ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एंड दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। ओके, हेटरोट्रॉफ्स में देयर आर अगेन थ्री टाइप्स, कंज्यूमर्स, डेट्रीवोरस एंड सैप्रोफाइट्स। ओके, so one by one we'll discuss, like autotroph. The first one, that mode of nutrition in which the organism prepares, synthesize their own organic food by using inorganic raw material like CO2 and water, they are called autotrophs. Example, best example is plants, that photosynthetic and chemosynthetic bacteria and cyanobacteria also comes into the autotrophs. Cyanobacteria, they are the they do the photosynthesis. Like this is a reaction, they have shown you 6 CO2 plus 6 water. In the presence of sunlight and chlorophyll, the glucose will form, oxygen will also form. Okay, so that oxygen is also used by the, you know, इसी की जो उल्टी रिएक्शन है, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ वी रिवर्स दिस रिएक्शन इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस की जो रिवर्स रिएक्शन है वो आप कह सकते हो एक तरह से रेस्पिरेशन है। ठीक है, इसमें CO2 से ग्लूकोज बन रही है, वहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और क्या बन रहा है? CO2। तो प्लांट्स जो कर रहे हैं उसका रिवर्स कर रहे हैं एनिमल्स। प्लांट्स तो रिलीज कर रहे हैं CO2,
और एनिमल्स और प्लांट जो भी रेस्पायर कर रहे हैं, दे विल रिलीज अ CO2. देखो प्लांट्स आल्सो रेस्पायर. इट डजंट मीन कि प्लांट्स अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो दे डोंट रेस्पायर. दे आल्सो कंज्यूम सम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन आल्सो. So plant photosynthesize, use light energy are called phototrophs, and few bacteria use chemicals to derive energy. They're called chemotrophs. Okay. Now photosynthesis is an important process by which food is formed. The plant make food using sunlight and water, which provide nourishment to the other organism and themselves. The photosynthetic process, chlorophyll is present in the green parts, absorb light energy. The light energy is used to split water into hydrogen and oxygen because water is made up of H2O. तो लाइट एनर्जी से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है वाटर का, और हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट एंड इट फॉर्म टिपिकली ग्लूकोज. The chlorophyll is essential for photosynthesis and stomata to facilitate the intake of carbon dioxide. स्टोमेटा की तरह, स्टोमेटा जो लीफ में स्टोमेटा होते हैं, दे विल फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ CO2. CO2 तो एटमॉस्फेयर में है, तो वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में आती है. स्टोमेटा क्या है? द स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. कहां पे होते हैं? अंडर साइड ऑफ द लीफ, जस्ट टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये स्टोमेटा जो होते हैं, they are at the underside of the leaf. Each stomata is guarded by the guard cells, okay, which control the opening and closing of the pore. You can see one is a closed stomata, another is a open stomata. They are just like a lip-like structure. जैसे आपके लिप्स अगर खुले हैं तो देखो स्टोमेटा ओपन है, किस तरह से बीच में स्पेस आ गया, और जब स्टोमेटा क्लोज है तो वो पोर क्या हो गया, बंद हो गया. ठीक है, तो दैट इज अ राइट वन इज अ स्टोमेटा ओपन एंड द लेफ्ट वन इज अ स्टोमेटा क्लोज. तो गार्ड सेल्स आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी. ये जो कर्व्ड सेल्स हैं इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल्स. द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शनिंग. ठीक है, कि उसे ओपन होना है कि क्लोज होना है. नाउ द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism derive their nutrition from other organism. They take ready-made organic food from other dead or living or plant or animal. This living organism showing heterotrophic nutrition, and that called heterotrophs. Like we are heterotrophs. All animals, fungi, many bacteria, and some non-green plants. क्योंकि plants हमेशा autotrophs नहीं है, जैसे कि insectivorous plants हैं. They are also heterotrophs. They are partially, because they are not totally dependent on the light. They are also heterotrophs. And man, that definitely we are heterotroph. The type of heterotrophic nutrition is, first is holozoic. The meaning of holozoic means that complete. Holo means complete, or zoic word is for the that animal that is feeding on solid food, which may be a plant product or animal product. Most of the animals, including human beings, take the solid food into the body by the process of ingestion. The ingested food is then digested. The meaning of digestion means broken down into simpler substances, which are then absorbed into the cell of the body, and then undigested and unabsorbed waste material are egested. Egested means thrown out of the body. Okay, we can now say that holozoic nutrition is a nutrition in which organism takes the complex organic food material into the body by the process of ingestion. The ingestion food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. So all animals, including vertebrates and invertebrates, they show this kind of holozoic nutrition. It has a following step: ingestion. In मतलब you are taking in complex organic food through mouth opening. जैसे आपने पराठा खाया सुबह, ठीक है, या किसी ने सैंडविच खाया, या किसी ने प्लेन चपाती खाई, रोटी खाई, दही के साथ, सब्जी के साथ, जो भी खाई, तो दैट इज इंजेक्शन. यू आर टेकिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड. ठीक है, दैट इज नॉट, यू आर नॉट टेकिंग सिंपल ग्लूकोज, यू आर टेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. भी उसमें दालें खाई तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो गए, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट हो गए, पराठे खाया तो बटर लिया है. उसके बाद क्या हुआ? डाइजेशन.
चेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। आपके इंजेक्शन आपने माउथ से इंजेस्ट किया, फिर वो अपनी एलिमेंट्री कैनाल में लाइक स्टमक में, पहले स्टमक में उसका डाइजेशन हुआ, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहां एंजाइम्स होंगे, वो उसको डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद वो एब्जॉर्ब होगा, पासिंग ऑफ सिंपल सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड और लिम्फ। तो वो वहां पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि जो आपका डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन आपने देखा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वहां बड़ी वेस्कुलर होती हैं, हाइफी होती हैं, और वो उस तरह की स्ट्रक्चर होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इसको आपके जो सॉल्युबल सिंपल न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्लड और लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब करें। लिम्फ में ज्यादातर फैट जाता है, ब्लड में आपके ग्लूकोज और प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स। एसिमिलेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो अमाइनो एसिड्स है या फिर जो शुगर हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि वी आर मल्टी सेलुलर। अब हर सेल को फूड चाहिए, हर सेल को एनर्जी चाहिए। अब आपका तो माउथ है, माउथ के थ्रू आपने इंजेक्शन किया, फिर डाइजेशन हुआ। अब डाइजेशन में जो आपके ब्लड में आ गया सारा, ठीक है। जैसे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ जाती है अचानक से, वो ब्लड शुगर अब क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि आपने खाना खाया है, तो उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी ने खाना डाइजेस्ट करा है। और जब आपको भूख लगती है तो इट मीन्स आपके अंदर ब्लड शुगर का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। Egestion, that is expelling out of the undigested food. Depending upon the type of food habit, animals are divided into three categories. You all know that is herbivorous, that animals that depend upon the green plants, they are known as herbivorous. Goat, cow, deer, rabbit. Carnivorous, animals which eat flesh or other animals as a food are called carnivorous, like lion, tiger. Omnivorous, animals which can eat both plants and animals as a food are known as omnivorous, like rat, pigs, crow, cockroaches, and humans. They are omnivorous. Okay, so on the basis of like type of food what they are eating, they are depend upon the three types. Now in heterotrophs, we have discussed the number one, that is holozoic. Okay, the other one, other type of the that is saprotrophic. Saprotrophic means, sapro means rotten and troph means feeder. Okay, so saprotrophs means it is a type of nutrition. The organism obtains their food from decaying organic substances. That is, the organisms are called saprotrophs. जैसे वहां हमने ऑटोट्रॉफ्स बोला था, हिट्रोट्रॉफ्स बोला था, ये हिट्रोट्रॉफ्स की कैटेगरी है। दीज आर द कैटेगरी ऑफ हिट्रोट्रॉफ्स। इसमें सेप्रोट्रॉफ्स है और कौन से हैं? पैरासाइट्स। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन के में जो हिट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन था उसमें तीन टाइप्स हैं। पहला हमने पढ़ा होलोजोइक, सेकंड हम पढ़ रहे हैं सेप्रोट्रॉफिक। और जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उन्हें बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे वहां था ऑटोट्रॉफ्स, एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई। पैरासिटिक, द थर्ड वन इज पैरासिटिक। पैरासिटिक में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज विच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैरासाइट। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहे हैं? पैरासाइट। डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहां पे डेड और डिकेइंग था। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक में डेड और डिकेइंग है, और यहाँ पे पैरासिटिक में क्या है? दे आर टेकिंग फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? होस्ट। क्योंकि अगर आप लिविंग से अगर आप ले रहे हो तो आप पैरासाइट हो, और अगर डेड और डिकेइंग से ले रहे हो तो क्या हो? सेप्रोफाइट हो। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, लाइक टेपम, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लूक्स, कस्क्यूटा। दीज आर द पैरासिटिक न्यूट्रिशन and they are taking nutrition from the living organism and that organism is called host. अब ये एक्टो पैरासाइट भी हो सकते हैं, एंडो पैरासाइट भी हो सकते हैं। अगर ये बॉडी के अंदर है तो इन्हें एंडो पैरासाइट बोलते हैं, अगर बॉडी के बाहर है, होस्ट बॉडी के बाहर है, तो बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। एक होता है म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन कैन बी डिफाइंड एज ए इंटरडिपेंडेंट न्यूट्रिशन
एक सेकेंड. It can be defined as an interdependent nutrition in which each organism is dependent mutually on the other. Mutualistic, like the lichens share mutualistic nutrition between the fungus and the algae. ठीक है, तो यहाँ पे algae is a phototroph and fungus will provide the space. Okay, that is a kind of mutual, like both are benefited. तो डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या क्या है, मेन डिफरेंसेस क्या है? अगर आप देखो तो सोर्स ऑफ एनर्जी ऑटोट्रॉफ में क्या सनलाइट है या फिर केमिकल एनर्जी है? हेटरोट्रॉफ में क्या है? रेडीमेड फूड, द स्पेस इज नॉट देयर, रेडीमेड फूड. हेटरोट्रॉफ में तो आप या तो डायरेक्ट ऑटोट्रॉफ को ले रहे हो या फिर किसी को किल करके खा रहे हो. बिकॉज हेटरोट्रॉफ में हमने पढ़ा होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफ और पैरासिटिक. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस. यहाँ पे क्या है? फीडिंग अपॉन डेड और लिविंग प्लांट्स. ये क्या आपका अकरेंस कहां पर है ऑटोट्रॉफ्स की? फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी में है, सर्टेन बैक्टीरिया में. इट इज फाउंड इन एनिमल्स, फंजाई एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलोजोइक एंड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? अगर आप होलोजोइक जैसे कि हमारा है, वहां पे क्या है? होलोजोइक में सॉलिड फूड, होल प्लांट और एनिमल और देयर पार्ट्स इज इंजेस्टेड. और सेप्रोट्रॉफिक में लिक्विड फूड है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से आप लेते हो एंड दैट इज इंजेस्टेड. ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक में जो भी होगा वहां पे डेड और डिकेइंग मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर. स्टेट ऑफ डाइजेशन दैट इज इनसाइड द बॉडी. होलोजोइक में आप कैसे कर रहे हो? डाइजेशन कहाँ हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है. एंड सेप्रोट्रॉफिक में क्या हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी. As enzymes are released on the food material, it converts solid food into the soluble fungus. जैसे आपने देखा फंगस ग्रो कर जाती है, ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, तो वो जो इंजेक्शन कर रही है, डाइजेशन कर रही है, वो कर रही है आउटसाइड द बॉडी. हम कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी. एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट ऑफ द एनिमल. और उसमें क्या है? फंजाई, ईस्ट, स्लाइम मोड्स, बैक्टीरिया. सो एनिमल्स दैट डिपेंड अपॉन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, they are known as sanguines. Example, bedbug, mosquito, leeches, etc. Some organisms take in pre-digested food through their body wall by the process of diffusion. This process of nutrition is called osmotropic nutrition. ठीक है, there are different terminology. The example is given the tapeworm and trypanosoma. The mode of nutrition found in fungi is, the correct answer is the saprotrophic nutrition, because it will take the nutrition from the dead and decaying matter, fungus. The explanation क्या है? In saprotrophic nutrition, the organism obtain their food from decaying organic matter. Now nutrition in unicellular organism. हम अब पढ़ेंगे कि unicellular organism में nutrition कैसे होता है, plants में कैसे होता है, और फिर human being में कैसे होता है. तो first we will discuss nutrition in unicellular organism like amoeba. अमीबा में क्या है? अमीबा इज ए होलोजोइक एंड ओमनिवोरस एनिमल. इट फीड्स अपॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम, डायटम्स, एल्गी एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर्स. मैकेनिज्म क्या है? न्यूट्रिशन इन अमीबा इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. इंजेक्शन. अमीबा हैज नो माउथ, so ingestion में, because it is single cell, amoeba is a eukaryote. It comes under Protista kingdom. It has no mouth, so ingestion may occur at any point of body surface. By generally it occurs at the advancing end of the body. Ingestion occur with the help of pseudopodia. They are the false podia, like it's a pseudo means false, podia means legs. The opening of food cup gradually becomes narrower and narrower and finally closes. So the food is finally enveloped and taken inside a food vacuole that is called phagosome along with a drop of water. So that we are discussing the nutrition in the Euglena. Okay, Euglena is a unicellular animal. It will comes under the category of both animal and plant because
They also do photosynthesis. When they don't have light, they also be heterotroph. It's a connecting link between the plant and animal. So digestion, amoeba. Sorry, we are discussing amoeba. Euglena is an example of connecting link between plant and animal. Amoeba, amoeba comes under the. It's a prokaryote. It's a prokaryotic unicellular organism. Amoeba shows intracellular and vascular digestion. In the cytoplasm, food vacuole fuses with the lysosome. These lysosome having the digestive enzyme. In this, the complex and non-diffusible nutrients are changed into the simple and diffusible nutrients. And medium inside the food vacuole is first acidic and then become alkaline, just like as in the case of alimentary canal. स्टमक में हमारा जो होता है वो एसिडिक होता है, और जब स्टमक से नीचे की तरफ जाते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो वहां पे क्या होता है, एल्कलाइन हो जाता है. Absorption and assimilation. In absorption, the diffusible nutrient pass through the vacuolar membrane into the cytoplasm by diffusion, and then the distributed through all the body part by streaming movements of the cytoplasm. Because they don't have any other organ, they are just having a single cell. So they are doing by this process, cyclosis. And due to the size of the food vacuole gradually decreases in the cytoplasm, a part of the absorbed food is oxidized to produce energy, and most of the simple nutrients are combined to synthesize complex compounds. Egestion, amoeba has no NS because it is just like a single cell. They don't have any digestive organ. So egestion may occur at any point by body surface, just like ingestion. Okay. So amoeba, the food is digested in the food vacuole. The correct answer is food vacuole. Now, the food, what is the meaning of food? The substance which is palatable, delicious, enough and energy provided is called food. Chemically, food consists of 6 essential components: carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamin, water. What is the meaning of digestion? Digestion is a catabolic process. If you remember, I told you in the metabolism, there are two processes. One is anabolism and other is catabolism. Anabolism, I have given you the example of photosynthesis, where you are making like complex from the simple molecules. And catabolic, you are digesting. You are making complex to simpler. So in digestion, you are doing in which the complex, non-diffusible, and larger components of the food are broken down into respective simple, diffusible, and smaller form with the help of various hydrolytic enzymes in the alimentary canal of the living organism. Okay, so that is called the digestion. Intracellular and extracellular digestion. What is the meaning of intra? मतलब inside the cell. Extracellular means outside the cell. Intracellular digestion means this type of digestion occur inside the cell cytoplasm. देखो सेल के सबसे बाहर में होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस. अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो बोलते हैं इंट्रासेलुलर. This food inside the cell occur as a food vacuole. The digestive enzyme is in case of secreted inside the cell. They digest the content of the food vacuole. So the entire process of digestion occur inside the cell. Example, protozoans, like amoeba and sponges. Sponges, they are come under the animals. Extracellular digestion क्या होता है? It takes place outside the cell. That is intercellular space. जो सेल्स के बीच में स्पेस है वहां पे होता है इंटरसेलुलर. एक होता है इंट्रा. इंट्रा मतलब विद इन सेल, सेल के अंदर हुआ तो इंट्रा. और इंटर मतलब जैसे कि बहुत सारी सेल्स हैं तो बीच में कई सारा स्पेस बच जाएगा. जैसे ईंटें लगी हो, ईंटों के बीच में जो स्पेस होगा तो वो हो जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस, और ए कैविटी फॉर्म बाय द मेनी सेल्स और टिश्यू. इन ऑल द एनिमल्स दिस कैविटी इज फाउंड एज ए लार्ज कैनाल एंड दैट इज कॉल्ड alimentary canal. In all animals, this cavity is found as a large canal and this is called alimentary canal. Hydrolysis, it is a kind of catabolic reaction in which a compound is broken into the smaller compound with the help of water, like hydro. The word hydro means come from the water, and lysis means breakdown. What is carbohydrate? These are the hydrates of carbon in which the ratio among carbon, hydrogen and oxygen is 1:2:1. Like C6H12O6 is a glucose.
So the ratio is the carbon, hydrogen and oxygen ratio in 1:2:1. So carbohydrates are the quickest source of energy on the basis of their composition. Carbohydrates are of following type like monosaccharides. They are simple sugar. They are called monosaccharides. The sugar cannot be further degraded to produce more sugar. तो तभी हम ग्लूकोज को दिया जाता है. किसी भी पेशेंट को आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ग्लूकोज दी जाती है, क्योंकि ग्लूकोज से सिंपलर फॉर्म, हमारी बॉडी सबसे सिंपलर फॉर्म जिसे एक्सेप्ट करती है वो ग्लूकोज है. ठीक है. और एग्जाम्पल क्या है? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. ठीक है. दीज आर 5 कार्बन शुगर्स, बट बॉडी हमारी जो एक्सेप्ट करती है सबसे अच्छी वो ग्लूकोज को करती है. ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? देखो यहाँ सिंगल शुगर है, तभी बोला मोनोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड, दीज आर कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ आइदर 1 to 10 यूनिट्स ऑफ द मोनोसैकेराइड. जैसे घर में आप यूज करते हो सुक्रोज, जो चीनी आप यूज करते हो उसे बोलते हैं सुक्रोज, बिकॉज इट इज कम फ्रॉम द शुगर केन. दैट इज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनी है. माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना है, इट्स अ डाइसैकेराइड. लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. All these are disaccharides. Polysaccharides are, these are the most complex carbohydrates which are polymers of thousands of units of monosaccharide like starch. जैसे आलू में स्टार्च होता है. ठीक है. Stored food in plants. Glycogen किसमें stored होता है? That is stored food in the animals. That's the difference between the plants and animals. Cellulose is a constituent of cell wall in the plants. What are fats? Fats are energy rich compounds. These are an ester of higher fatty acid. Ester are formed by the addition of alcohol with the acid. जैसे glycerol है 3-hydroxy propane. I don't know the exactly name of IUPAC name. You can see the glycerol structure. It's a type of alcohol, and they are, when they did ester, when the ester are formed, so they are called, they are the ester of higher fatty acid. Then fat will form, and proteins are the polymers of amino acid. Amino acids are held together by means of a peptide bond to form polypeptide chain. On the basis of gross size of food, the mechanism is different. Animals may be main type like macrophagy, those who are feeding on microscopic organisms like amoeba, paramecium. Macrophagy, that is feeding on the larger form of organism like majority of non-chordates and some chordates. Okay, that is called macrophagy. In paramecium, ingestion is aided by the beating of cilia. It has a definite food passage. The mouth is called, it is also unicellular. So we just call cytostome and cytophague in this paramecium. Food vacuole is commonly called temporary stomach or gastritis. It is a site of storage of food. The most common mode of ingestion in amoeba is circumvallation. In this, pseudopodia extend and form a cup-like structure called a food cup around the prey. So now we will discuss only, then I will ask you. Okay. So up to this, we have discussed about the nutrition and what are the nutrients. Tomorrow we will discuss the nutrition in plants and condition necessary for photosynthesis, and the experiments that shows that sunlight is necessary for photosynthesis or chlorophyll is necessary for photosynthesis, and the carbon dioxide is necessary for photosynthesis, and then what is the site of photosynthesis, and after that we will discuss nutrition in animals. Okay, in detail. I have just given you overview. We will discuss in detail like what is ingestion, what is digestion, what is absorption, what is assimilation, and then finally we will come to the human beings. We will start in the digestion or nutrition in human beings. So thank you very much.